Hello friends, welcome to the easy guide to cracking the English section in the CLAT examination. So this is a video in the continuation of our previous lecture, that is the VIEWSTAMP methodology. So in this we'll start off where we left. So we have to start with our fourth element, that is understanding the structure. Now for understanding the structure, you understand how the ideas are arranged in the paragraph, in the passage. And why it is important? Because it helps you return to passage multiple times when you're answering the question. Because for every question, it's quite likely that you'll have to return back to the passage because you really want to be sure. Because all the options look very similar. So in that case, you'll have to return to the passage multiple times, but you can't keep reading the whole thing again and again and find that locate your answer. So it's very important that when you're reading the passage, you try to understand how it is structured. So you know where you have to return to find any specific answer. So to successfully return to the passage, you must attempt to identify the underlying logical structure of the passage as you read. You identify the role of each paragraph, the introduction, evidences, counter arguments, conclusion. So if you have identified these things, no, so you'll know okay, this question is from this specific section. So you'll look around those lines and you'll be able to locate your answers very quickly. So you just understanding the structure can be thought of like understanding a Bollywood movie. Movie opens, there's setting up of story, then conflict builds up, and then by the end of it, resolution. So let's try to understand it through a Bollywood movie and like one of my favorites, Three Idiot. So how the movie is introduced, the introduction, which will tell you the main idea, the context. It will be the context setting. Usually the first few lines of the first paragraph is context setting. So in the movie we see Farhan and Raju begin their journey to find Rancho, their long lost college friends. Like we talked about assumption in the previous video. So when I am talking about Three Idiots, it's my assumption that you might have watched this movie. If you have not, then also nothing to worry. You can still understand it from the explanation, or because this is how any Bollywood movie goes. So it's not like if you have not watched the movie, you will not understand this. So in the movie, it starts with Farhan and Raju beginning their journey to find Rancho, their long lost college friend. This is the introduction part of the movie. So it introduces the main idea of the passage, just like a movie introduces the central characters and theme. So introduction में हमें मोटे मोटे characters दिख गए. Then the background information, that is setting of the premise. Now, how the premise is set up in that movie? Flashbacks to college life, introduction of Rancho, his unique philosophy of education. तो ऐसे ही पैसेज में भी इंट्रोडक्शन के बाद अलग नेक्स्ट सेक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डिटेल्स अबाउट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. हमने व्यू पॉइंट की बात पिछले वीडियो में की थी. तो इस मूवी में है रैंचो का बिलीफ वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन का बिलीफ. ठीक है. देन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट थ्योरी, वन साइड ऑफ द डिबेट इज इंट्रोड्यूस्ड. इस मूवी में वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है? वायरस द डायरेक्टर, जो बमन रानी का रोल है, जो डायरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, ही इंसिस्ट दैट सक्सेस कम्स ओनली थ्रू रोट लर्निंग एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन का यूजुअली तरीका होता है. तो हमने देखा कि पहला आर्ग्यूमेंट या पहला बिलीफ इंट्रोड्यूस हो जाता है. द पैसेज इंट्रोड्यूसेस एन आर्ग्यूमेंट दैट इज ट्रेडिशनल एजुकेशन इज इक्वल्स टू सक्सेस, जस्ट लाइक हाउ द मूवी सेट्स अप द कॉन्फ्लिक्ट. देन द काउंटर आर्ग्यूमेंट हमें दिखता है रैंचो की एक फिलोसफी है, रैंचो की अपने हरकतों के तरीके से, कि वो कैसे पानी खत्म हो गया है तो पाइप लेकर के गार्डन में नहा लिया, या और भी इस तरीके की क्वर्की थिंग्स दैट रैंचो डज. नाउ क्वर्की का मतलब क्या होता है, ये आप यू गो बैक एंड लुक इनटू, गूगल इट एंड मे बी note it down later. So Rancho does the system, challenges the system, and he advocates for conceptual learning and curiosity. तो ये counter argument introduce हुआ मूवी में. तो ऐसे ही conflicting viewpoint is introduced in the passage, just like how counter argument appear in the movie. Now supporting evidences. Rancho excels in studies by understanding concepts rather than memorizing. His unique approach helps लोबो, एक कैरेक्टर था जिसने सुसाइड कर ली थी अगर आपको याद हो, फरहान एंड राजू. तो ये जो है, अब जो एविडेंसेस है, जो प्रेमिसेस हैं, वो रैंचो की एक्टिविटीज से रैंचो के व्यू को सपोर्ट कर रही हैं. ठीक है. ऐसे ही पैसेज में भी होता है कि कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट होते हैं जो ऑथर देता है. तो वो दो बिलीफ जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, उनमें से एक आर्ग्यूमेंट जिसको ऑथर सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए प्रेमिस देख लोगे, आप सपोर्टिंग एविडेंसेस आएंगे. देन क्लाइमैक्स, strongest argument or turning point. Raju's job interview and Rancho's revolution as Hunsuk Wangru. Then conclusion.
summary or the final thought. Rancho's philosophy wins. Education should be about learning and not marks. Pursue excellence, success will follow. तो जैसे हमने देखा एक बॉलीवुड मूवी का पूरा सेटअप होता है. अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि रांचो का असली नाम क्या था, तो यू नो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी पे आना है. जब वो वाला क्या कहते हैं, लेह लद्दाख वाला सीन आया था, उस पॉइंट के अराउंड अगर देखो तो वहां कहीं उसका असली नाम मिल जाएगा. तो इस तरीके से जब आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है अपने पैसेज का, तो जब आपको किसी वापस उस पे जाना है कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए, तो यू विल नो कि यहाँ कहीं वो आंसर लाई कर रहा होगा. तो दैट विल मेक योर लाइफ इजियर. ओके. नाउ पिन पॉइंटिंग द मेन पॉइंट. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड देम बेटर कि इनका एप्लीकेशन कैसा होना है. अब मेन पॉइंट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज. तो इसके दो तरीके हैं कि एक तो आपको वैसे भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मेन पॉइंट ही नहीं समझा तो आप कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. और दूसरा कि वो मेन पॉइंट ही पूछ लेता है, तो वो तो एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है अगर आपने मेन पॉइंट समझ लिया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So I will discuss this in detail here itself. Although following videos में I'll be discussing different question types, तो उसमें भी we'll come across main point, but क्योंकि हम यहाँ समझ चुके होंगे तो वहाँ it will be a revision. Okay. So the main point of a passage is the central idea or the ultimate conclusion that the author is attempting to prove. Although in the majority of passages the main point is stated in the first paragraph itself, it is not always the case. मतलब कई बार ऐसा होता है कि पहली लाइन में ही वो इंट्रोड्यूस हो जाता है कि this is what the paragraph is going passage is going to talk about, but this is not always the case. ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा इसी माइंडसेट से नहीं चलना है कि पहली लाइन में जो लिखा है वही मेन आइडिया है. कई बार ऑथर एकदम उसको काउंटर भी कर देता है. तो ये एक क्लू है, बट यू टेक इट विद अ कॉशन. The main point of many passages may appear in the final sentence of the first paragraph or in the first sentence of the second paragraph also, and at times in the last paragraph. तो इस तरीके से मेन पॉइंट अपीयर होता है, बट कई बार वो फर्स्ट में कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, फिर उसके बाद उसके फाइनल सेंटेंस में मेन पॉइंट बता देता है, या फिर कई बार सेकेंड पैराग्राफ के फाइनल फर्स्ट सेंटेंस में बता देता है. तो वो वेरी करता रहता है. Now the trick to find the main point is if the passage was a tweet, what would it say? तो अगर मान लीजिए आपके पास एक लंबा सा पैसेज है और आपको उसको खाली ट्विटर के ट्वीट के फॉर्म में लिखना है, तो हाउ विल यू राइट इट? जो आपके वो चूज करेंगे आप मैसेज, वही आपका मेन पॉइंट है. ठीक है. Now the key to identifying a main point is to remember that although the main point may be stated succinctly in a sentence or two, all the paragraphs of the passage must support that main point. Succinctly का क्या मतलब होता है? कैन समबडी डिराइव? इस कॉन्टेक्स्ट से आप पहले एक बार को पॉज करके समझने की कोशिश करो कि सेकेंडली का क्या मतलब होगा, जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है. तो द वर्ड सेकेंडली मीन्स कि बहुत ही समराइज तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही समराइज बेसिकली कंसाइज तरीके से वो किसी चीज को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको सेकेंडली एक्सप्रेस करना बोलते हैं. तो वाइल इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस कि भाई आपको दिख गया कि फर्स्ट लाइन में आपको मिल गया है वो, बट यू हैव टू सी कि वो मेन पॉइंट तभी वो मेन पॉइंट होगा जब वो ऑल थ्रू उसी के बारे में सारे एविडेंसेस, सारे प्रेमिस उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो. क्या पता आपने देखा हो कि भाई उसने शुरुआत में कोई आइडिया बोला एंड यू थॉट हाँ फर्स्ट लाइन मेन पॉइंट होगा, एंड देन यू सी कि बाकी प्रेमिसेस के थ्रू उसको वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो प्रेमिसेस का से पता चल रहा है तो काउंटर आर्ग्यूमेंट है. तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बाकी का पूरा पैसेज है ना, वो उस मेन पॉइंट के सपोर्ट में ही होना चाहिए, तभी वो मेन पॉइंट होगा. वरना हो सकता है कि वो मेन पॉइंट नहीं है और ऑथर ने आपको गुगली फेंकी है कि भाई शुरुआत में उसने कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दिया. ठीक है. Thus, the main point will not just reflect the argument contained in a single paragraph, but it will instead represent the author's objectives for the entirety of the passage. है ना. तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि वो पूरा पैसेज उस मेन पॉइंट की तरफ आपको ले जा रहा है, वो पूरी कायनात, पूरा पैसेज आपको उस जगह ले जा रहा है, तभी वो मेन पॉइंट है. ठीक है. Two types of incorrect answers frequently appear with main point question. Answers that are true but not encapsulate, they do not encapsulate the author's point, and answers that repeat portions of the passage but not the that are repeated portions of the passage but not the main point. तो ये कई बार मेन पॉइंट ढूंढने में ये दो तरह की गलतियां हो जाती हैं. व्हाट डज द वर्ड एनकैप्सुलेट मींस बाय द वे? कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट? ट्राई टू ब्रेक इट. कैप्सूल, यू अंडरस्टैंड कैप्सूल? कैप्सूल होती है, उसके अंदर दवा होती है, कैप्सूल ले जाती है एस्ट्रोनॉट्स को, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं. तो इनकैप्सुलेट करना मतलब कोई चीज को उसके अंदर होना. तो आंसर्स आर ट्रू बट डू नॉट इनकैप्सुलेट, यानी कि उनके वो कैप्चर नहीं करते ऑथर के पॉइंट को.
तो कई बार ऐसा होता है कि if the question asks what is the main point, so the options are given in such a way that one of the option will be which is true, but that is not the author's main point. Like I had told you in the previous video itself that अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो passage कह रहा है you have to answer for the author. So the main point should always capture the author's point. It doesn't matter if the sky is blue, but if the author's opinion is that sky is yellow, your answer will be sky is yellow. Okay? And the answers that repeat portions of the passage, but they are not the main point. So sometimes what they do is to trick the students is they'll write some fact from the passage. Now you'll be like, ये तो passage में था, यही होगा main point. No, the main point is to be reflected in all through the passage. ये नहीं कि second paragraph से कोई line निकाल के रख दी, then you think कि हाँ ये passage में कहीं पढ़ा था, this might be the main point. That might not be the main point. So you have to be wary of those options. Okay. Now, skim the passage for structure. How do you find the main point? Skim the passage for structure. Now, again, मेरा assumption है that since you've watched the previous videos, आपको skim करने का मतलब पता होगा. तो यहाँ पे मैं आपको इस बात से दो चीजें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि assumption क्या होता है कि मैंने pre assume किया, उसके बाद ये लाइन यहाँ पे लिखी है, और skim करना क्या होता है, अगर नहीं पता you go back to that video and see what skimming means. It just means like ऐसे casually एक बार उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है. तो skim the passage for structure. तो आप ऐसे मोटा मोटा जैसे भी हमने स्ट्रक्चर समझा ना कि अच्छा ये इंट्रोडक्शन है, ये यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, यहाँ पे प्रोज बता रहा है, यहाँ पे कॉन्स बता रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन आया है. तो इस तरीके से आप समझ जाइए. अच्छा कंक्लूजन वाली लाइन जल्दी से देख लो. कई बार होता है ना कि आपके पास एक लंबा सा मैसेज आता है तो आप उसकी लास्ट लाइन पढ़ लेते हो कि अच्छा देखूंगी कहना क्या चाह रहा है जल्दी से, व्हेन यू डोंट हैव द टाइम. या कई बार एडिटोरियल है तो उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हो टू अंडरस्टैंड व्हाट द एडिटोरियल इज अबाउट. So skim the passage for the structure and maybe look for that point. So look at the structure. Notice how passage begins, develops, and ends. Focus on the first paragraph and the last paragraph. They often contain the author's key message. Okay, key message. Okay. For example, opening. Climate change is the biggest threat to human existence. मान लीजिए कोई पैसेज ऐसे इस लाइन के साथ ओपन हो रहा है और वो पैसेज एंड हो रहा है, thus bold climate action is not a choice but a necessity. तो अब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऑथर सपोर्ट्स द इमीडिएट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो बाकी सब इस तरीके की बात उसने की होगी. तो बेसिकली द मेन पॉइंट इज कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक थ्रेट है और बोल्ड एक्शंस की रिक्वायरमेंट है. तो अगर ऑप्शन ऐसा कहता है कि द ऑथर सपोर्ट्स इमीडिएट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट कुड बी द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज. अनदर वे कुड बी टू आइडेंटिफाई द ऑथर्स पर्पस, कि ऑथर का पर्पस क्या है, व्हाट व्हाई इज ऑथर सेइंग व्हाट द ऑथर इज सेइंग. So ask, why did the author write this? To argue for in the favor of some sort of view, to inform the readers, to analyze the subject, to compare two things or more things, या to criticize something. So you also have to try to understand कि author का purpose क्या है. If the author takes a strong stand, the main point is often an opinion or conclusion. तो अगर ओपिनियन बेस्ड पैसेज होगा तो उसमें अक्सर एंड में होगा, बिकॉज ऑथर पहले बहुत सारे एविडेंसेस देता है, देन दे मेक एन ओपिनियन कि ये चीज क्यों गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये सही है, ऐसा ऐसा ऐसा, एंड हेंस एन ओपिनियन दैट द ऑथर इज मेकिंग. For example, if the passage discusses pros and cons of online education, and then it ends with something like, however, its limitations make it an imperfect substitute for an in-person learning. तो इस तरीके से अगर कोई लाइन ऐसे हाउएवर करके इस तरीके से कोई लाइन आपको दिखती है तो आपको ऐसे एक आइडिया लगना चाहिए कि मेन पॉइंट इज समथिंग अराउंड ऑनलाइन एजुकेशन हैज बेनिफिट्स बट कांट फुल्ली रिप्लेस इन पर्सन लर्निंग. तो इस तरीके से ये आपको पकड़ने की कोशिश करने की मेन पॉइंट क्या है, उसका मतलब पर्पस क्या है. अगर आपको पर्पस समझ में आ गया तो भी वो कई बार मेन पॉइंट आपका इनकैप्सुलेट कर लेता है. Now, another way to identify the main point is focus on the repeated idea. कई बार कुछ आइडियाज है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो आप समझ जाओ कि ये आपका मेन पॉइंट है, इसीलिए इसको बार बार वो अकर हो रहा है. So notice words or phrases that appear again and again. These would be the central thing. If an idea keeps recurring across paragraphs, it's likely important to the main point. For example, if the biodiversity loss appears in multiple paragraphs, कि बायोडाइवर्सिटी लॉस बोल के कॉजेस बताए हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस बोल के इफेक्ट्स बताए हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस को से बचने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, देन डेफिनेटली द मेन आइडिया इज समथिंग अराउंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो इस तरीके से भी आप मेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन फाइंड द कंक्लूजन और की ओपिनियन. अब ये कंक्लूजन कैसे पहचानना है ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. लुक
for the sentences that sum up the argument, that sum up the premises. These may start with therefore, thus, clearly, in conclusion. It's not going to be that easy in conclusion, ही लिख दे, but sometimes. So these are good clues to get the main point. For example, therefore, investing in mental health support must become a priority for policymakers. So the main point is government must prioritize mental health support. तो अगर ये therefore से आपने पकड़ लिया, अच्छा ये कंक्लूजन है कि ये ऐसा ऑथर ऐसा बोलना चाह रहा है कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है, तो मतलब कि ये मेन पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब ये पैसेज के फॉर्म में होगा तो उसने बहुत सारे और भी पॉइंट्स दिए होंगे जिससे आप इस मेन पॉइंट पे पहुंचे। So we'll do this in detail in the full-fledged passages. Another way to identify the main point could be pre-phrase before looking at options. Again, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू जब रीडिंग करते हैं ना, तो अपने दिमाग में अगर उसने मेन पॉइंट नहीं भी पूछा है, यूजुअली अगर वो मेन पॉइंट पूछता है तो वो पहला ही क्वेश्चन होता है, बट अगर उसने नहीं भी पूछा हुआ है तो पैसेज के एंड में टेक 1 सेकेंड, एंड दिस शुड नॉट टेक मोर देन अ सेकेंड, कि सोच लो अच्छा ये पैसेज इस बारे में था। क्योंकि जब आपको पता रहेगा ना इस बारे में था, या ऐसा ऐसा पॉजिटिव अबाउट से सोशल मीडिया या नेगेटिव अबाउट सोशल मीडिया, कुछ इतना रफ भी अगर आपने दिमाग में बनाया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बिफोर यू लुक एट द मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस दैट आर देयर फॉर मेन पॉइंट, think of like what you have understood. So if I had to explain the passage in one line, like I said, tweet के फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना होगा तो मैं क्या बोलूंगी, तो वो सोच लो और उसके बाद ऑप्शंस पे देखो, तो जो भी आपके सबसे क्लोजेस्ट आता है वो आपका मेन पॉइंट होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस एंड सी हाउ टू फाइंड अ मेन पॉइंट। तो ये मैं रीड करूंगी, बट आप अपने आप से भी पॉज करके रीड करके ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। With the rise of technology, traditional methods of learning are being replaced by digital platforms. Many educators argue that e-learning offers great flexibility and accessibility to students across the globe. However, critics believe that online education lacks the discipline and engagement of a physical classroom, making it less effective for certain subjects. Despite these concerns, research suggests that a blended approach combining online resources with in-person instruction yields the best learning outcome. ब्लेंडेड अप्रोच में ब्लेंडेड वर्ड का मतलब पता है, आपने सुना होगा ब्लेंडर, मिक्सर ब्लेंडर होता है। तो ब्लेंडेड मतलब कि मिला जुला, ब्लेंड करना मतलब मिलाना, जैसे दो कलर्स को ब्लेंड करके एक तीसरा कलर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लेंडेड अप्रोच। So I'm gonna pause for a few seconds. You can pause the video here and maybe try to solve कि कहना क्या चाह रहा है, what is the main point of this passage. Okay, I believe you might have tried to find the main point. Let's see. So the question is, what is the main point of the passage? I'm sorry. Now you try to solve the question. E-learning is superior to traditional classroom learning. B, traditional learning is still the best method. C, a blended approach combining online and offline learning is most effective. Or D, online education is effective. Fairly simple, but still. So the answer is C. A blended approach combining online and offline learning is most effective. So we see somewhere towards the end, उन्होंने पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया, फिर उन्होंने मैनी एजुकेटर्स आर्ग्यू का एक मैनी एजुकेटर्स का एक व्यू दिया, फिर दूसरा व्यू दिया, क्रिटिक्स का व्यू दिया, और उसके बाद अपना एक कंक्लूजन बताया। तो व्यू पॉइंट हमें दिख गए और हमें दिखा कि ये कंक्लूजन है। क्या कहते हैं, डिस्पाइट दीज कंसर्न्स, रिसर्च सजेस्ट दैट ब्लेंडेड अप्रोच, अगेन ये प्रेमाइस इंट्रोड्यूस हुआ, ब्लेंडेड अप्रोच एक बेस्ट वो है बिकॉज ये बेस्ट ऑफ बोथ को क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ को रिप्रेजेंट करता है। So the passage discusses both sides, pros and cons of e-learning. It concludes with a research supporting blended approach, which means this is the main point. So option A and B, they are one-sided arguments. The passage reflects both the sides. E-learning is superior to traditional classroom learning. ये सिर्फ एक aspect है, पर ये पूरा passage इसको support नहीं करता है। फिर ट्रेडिशनल लर्निंग इज द बेस्ट मेथड, ये भी एक ही एस्पेक्ट है, पूरा पैसेज इसको सपोर्ट नहीं करता। ये दोनों चीजें पैसेज में बोली गई हैं, बट ये एक साइड, दो साइड, और जो पैसेज का मेन पॉइंट है वो इनका कॉम्बिनेशन है। हेंस ए एंड बी आर रॉन्ग एंड डी इज टू एक्सट्रीम, लाइक आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। जो चीज बहुत एक्सट्रीम लगे वो तो मोस्ट लाइकली गलत ही होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज इनइफेक्टिव, इतनी एक्सट्रीम बात तो कहीं ही नहीं गई। Now, we have to see what the VIEWSTAMP method is, and we will try to apply it to a passage. So before that, we will quickly revise what the whole VIEWSTAMP method is.
So you read a sample passage and you try to identify what are the different viewpoints that are represented in the passage, what is the structure of the passage, so that you can go back to it and look for the answer. So you can locate your answer, where exactly do they lie in the whole long passage. What is the tone of the message? गुस्से में कह रहा है, खुशी से कह रहा है, is the author pessimistic about it, optimistic about it, hopeful about it or not? What are the arguments that are represented in the passage, so that you can answer the questions related to counter arguments or मुद्दा आप समझ सके, and what is the main point of the passage, कहना क्या चाह रहे हो. Okay, now the practice passage. Let's try to see how we will employ all these tools that we have understood in the VIEWSTAMP methodology in solving a passage. So let's read the passage first. The Vienna Circle, an association of philosophers gathered around the University of Vienna in 1922, pioneered a positivist philosophy of science. Their aim was to present a unified vision of the world, where knowledge can only derive from experience through the application of logical analysis. Not surprisingly, most members of the Vienna Circle eschewed metaphysics, embracing a decidedly empiricist attitude towards the pursuit of scientific truth. Their attitude was shared by other prominent scientists, such as Albert Einstein, whose works were frequently cited in monographs published by members of the circle. Ironically, by the time the Vienna Circle discovered an intellectual bond with Einstein, he had departed from his positivist views to pursue less optimistic answers to the questions of political, philosophical, and scientific unity. Again, आपको ये पैसेज अभी, if you're in the starting phase of your preparation, तो इस पेज पे पढ़ना है, but eventually एग्जाम में आप इस पेज पे नहीं पढ़ रहे होंगे. But anyway, it's a difficult one, and you have to try to understand. कुछ मोटे मोटे भारी भारी words use हुए हैं conceptual type के. So even if you, let's assume आपको नहीं पता है, क्योंकि when you are doing the passage in the exam, ऐसे बहुत से words होंगे जो आपको नहीं पता होंगे. तो अगर नहीं पता है तो पहले बिना पता हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, and then do make it a point that you look up these difficult words in the dictionary and note them down. Okay, so it can be inferred from the passage that Albert Einstein would be most likely to agree with which of the following statements concerning the positivist philosophy of science pioneered by the Vienna Circle in 1922. Now your options are: though theoretically valuable, its erroneously embraced an empiricist attitude towards the pursuit of scientific truth. Its rejection of metaphysics resulted in a quest for scientific unity that was too optimistic. C. Its emphasis on empirical knowledge was laudable, even if the goal of presenting a unified vision of world was ultimately unrealistic. And D. Its quest for political, philosophical, and scientific unity was detrimental. Detrimental was the word that we did in the last video, right? To its pursuit of scientific truth. Now I'll pause here for a few seconds and you try to solve this. You can go back to maybe the passage and try to solve the question. You can pause the video at this point and try to solve, and I will get to the solution. So the answer is, its emphasis on empirical knowledge was laudable, even if the goal of presenting a unified vision of the world was ultimately unrealistic. तो आप इसको सॉल्व करने का आपको यही तरीका है कि आप सबसे पहले देखें कि पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी यहाँ पे गई हुई थी, यहाँ पे कहाँ मेंशन थी. तो आपको अगर रिटर्न भी करना है तो यू विल रिटर्न टू दैट पॉइंट एंड ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज सेइंग. ठीक है. So its emphasis on empirical knowledge was laudable, even if the goal of presenting a unified vision of world was ultimately unrealistic. This passage suggests which one of the following about metaphysics? A. It was a reaction against the positivist philosophy of science. B. It failed to present a unified vision of the world. C. It did not necessarily seek to derive knowledge through experience alone. D. It was initially embraced by prominent scientists such as Einstein. E. It was regarded by the members of Vienna Circle as intellectually suspect. You can again go back to the passage, pause it here, and let's see the answer. So they did not necessarily seek to derive the knowledge through experience alone. This is what metaphysics is as per the passage. So where is the word metaphysics given in the passage? You get back to that and you reread that line and see what the passage is saying, what metaphysics is. तो आपको अगर metaphysics का मतलब नहीं भी पता है, so that's all right. आपको मगर ये देखना है कि passage क्या बता रहा है metaphysics के बारे में. Okay?
So with this, we come to an end to our video, and this is all the thing that you need to know about ViewSTAMP methodology. And in the following videos, we'll try to solve questions based on ViewSTAMP methodology. At this point, I just want you to go back and revise both the videos together. And then when we solve, you'll see how each and every element is coming handy in solving the questions. Okay, thank you.